I should go for this session, let us discuss something about the today's program. You can say that this particular program we have scheduled for 3 days period. So if you visit our website smartfinancing.com, 3 days we have this particular program. So today, tomorrow, and 10th, 9:30 will be starting, 10:15. So 45-minute program will be there, and we too also have a paid program. So paid program also scheduled between 31st August to 15th September. It is on various technical analysis concept which you can use in a simple Excel sheet. You don't require any sophisticated software for this. So you can use this concept in a simple Excel sheet. So couple of advanced concepts I have added here, couple of old prevailing and most used concepts also there. So this program also we are planning on the 31st of August till 15th of September it will go on. Now coming to today's program, what we are going to learn today is a live program, as I mentioned to all of you. It's a live program, and here we are going to use GAN 1SD natural constant principle in live market, option intraday and option spread trade. So these two things we are also going to do. So market there is a gap down opening happened and all these things happened. So you can see that now all of you are able to see my screen. So you can see here we have, you can say, Nifty and other instruments trading actively. And currently, lot of changes happened in the market. So earlier we did not have a data point, but currently we have a data point available with us. What the regulatory SEBI is saying that out of 85 lakh F&O traders, F&O trader, 75 lakh, almost 75 to 78 lakhs people, F&O trader, lost money. They are losing money. This is losing money. So at least we have numbers now. Similar things they are telling that we have near to 80 lakhs people doing intraday, and they are also near to 70 lakh people. 70 lakh people are losing money. So this is what the SEBI data says, and it is truth. Why it happens? We need to introspect a lot in that. The reason is 90% of those failure traders, or more than 90% of the failure traders, they do not use any kind of hedging mechanism in their trade. So they do not use any kind of hedging mechanism in their trade. Number one. Second, all these losing traders having one common attribute. Common attribute is what? First, they do not hedge the trade. Number one point you have understood. Second is extra leveraging. So whenever they do a trade, if they have 5,000 rupees, they will take 5,000 rupees also. They will take a trading power of 50,000. So 50K they will take and they will trade on that. So which is again a bad idea. And third is over trading. So over trading means every day if he is failed in one trade, he is going to jump into another trade and that process continues. So these are the factors of our failure, and none of them, because this number is not a fancy number, it is a very frightening number. Out of 80 lakhs intraday trader, 70 lakhs people lose money. Out of 85 lakhs F&O trader, 78 lakh people lose money, and they have also quantified. So this F&O segment, they are telling that last financial year alone, 60,000 crore money is being lost. So here, when this kind of situation comes to our domain, so we say that market is not a place where you can do a business and you can't get a success. That kind of view is there. So it is not true. The view what
is being given there, that nobody can able to make money in the market. It is not true. Reason is certain part of our mistakes are there which we are not correcting. If you correct those mistakes, definitely, so if we correct that mistakes, then definitely we'll be having a different result. So you can say our mistakes is not hedging the trades, number one, over trading, number two, number three, not using any valid concept. So when it comes to नॉट यूजिंग एनी वैलिड कंसेप्ट, मेरे मन में जो आया मैं वही किया, वही मीन्स दैट काइंड ऑफ ट्रेड्स इज हैपनिंग. सो द ट्रेड्स इज हैपनिंग, मेरे मन में जो आया, जो मेरे मन को आया वही है ट्रेड, एंड वही मेरा स्टॉप लॉस, वही है टारगेट जो मेरे मन को आया. सो जो भी मेरे मन को आया कि यहीं पे 5 रुपए के नीचे में स्टॉप लॉस लगा दो, तो 5 रुपए के नीचे लगा दिया. That should not be the process. Process is we must follow some valid concepts. So that we are going to test it today in the live market. So in live market, we are going to test it today how this concept of WD GAN's vibration number, natural constant, one standard deviation method, this works in the real market. So I will give you a intro about this particular software. This is our smart IT tool. Here, two major advantage of this particular software. Number one, all these methods, whatever is given here, natural constant, GAN vibration, intraday vibration, volatility, Fibonacci, all these methods you can learn from our course. So nothing is hidden. That formula is hidden. You can't able to see that formula. So that is not there. First advantage, you know what is the calculation. Second, it is not ambiguous like chart and graph. So chart and graph says that so somewhere you can buy and somewhere it is a crossover happened. So exact price point you will not get. And chart and graphs, again, it is a discrete data. They do not take volatility into confidence except a few indicators. None of them takes volatility into confidence. So that is using discrete data, and current market data is discrete random high frequency data. So data itself is changed. So these are the factors we have for, you can say these are the factors we are having, you can say we need to change that. So fine. So now once this particular software, many of you are having this software, many of you will be using the trial edition of the new edition of this particular software. This particular software we have given a trial edition also. So if you are not using the trial edition, you can WhatsApp me, you can call to our support number. So they will avail you that trial edition. So here, what happens here? You can able to trade in options, you can trade in equity and futures. You have a option scanner. You can do pair trade. You can do commodity. All segments we have done. So here, while using the software, you can choose any of the segment of your choice. So your choice is, suppose if you want to trade in equity. So here you have to select equity. If you want to trade in stock future, you have to select stock future. If you want to select index future, you choose the index future. So based on your choice, you have to make it. Suppose I have chosen the Nifty as my index future trade. So why always I promote for index trading? Because index is a such a instrument which will be very less affected by your management calls or anything. So you can say index is more stable, it has more liquidity, and it is easy to hedge the index. So for that we are going for the index. So couple of GAN concept you can, I'll just demonstrate, and we'll go to the session 9:30. Like so here I'm going to load the data. Data is loaded, analysis is done, it is popping up on my screen. So here by default one standard deviation we have given. So currently if you say that
We are at 24,245. This is the price we are trading. To 43, 44, 45 we are trading, and our analysis says here 24,235 below I have a downtrend, and above 24,362 only I have a uptrend. So I do not have a uptrend above 230, 240 or 250. I have a uptrend above 24,362. I am very close near to the downtrend, but I am very far from the uptrend. So let the breakout comes, I will decide on that. Then I'll be going here GAN vibration number. So whenever you go for the GAN vibration number, have a look here. This is monthly vibration number. Monthly vibration number, and after spot level is being utilized when the 25,000 came, then after there is a correction in the market. Market has come down to 23,992, which is just 2 days before 23,992. So you can say that. So 982 was our one of our vibration number. Slightly near to that it has come, and from there it has gone up and it has maintained in that level. So these are the vibration number. It is monthly vibration number. Coming to intraday vibration number. So today something, so we have, you can say 299, 23, 24, 299, 24, 223. These are the values happened. So 299 high happened, 223.3. I am just putting this on your screen. You can see here. So this is in front of, now it has suddenly jumped to 75. You can say here we are having 23 today's low, today's high. So 24 223, 24 299 it has opened. That is the day's high, and currently at 273 we are trading. Have a look at the vibration number. So it is telling that we are having a vibration number at 249. So that is the first resistance it has. If that cross that resistance, we have no threat till 301, 24 301. If that crosses that, there is no resistance till 24 610, which is in the second cycle. Same process, if 24 247 support is broken, then 24 195, 24 91, and 24 65 all are future level. Take a photograph this. If your mobile device is there, just take a photograph of these particular readings and revalidate at the end of the day. End of the day, revalidate whether this particular values has come or not, that you got a vibration number. So vibration number is not for trading. It is going to give you the view that which resistance and support is more prominent for the day, which resistance and support is more important for the day. आज के दिन के लिए कौन सा रेजिस्टेंस मोर जो ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण है वही दिखाएगा। जो भी आपका लोज है, जो भी हाइज है सपोर्ट्स के साइड में, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है वाइब्रेशन नंबर। वाइब्रेशन नंबर आपको ये बताता है आज के दिन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहेगा। So then we go to the various method. One standard deviation method we have gone. We have seen that we are very far from the uptrend. We are very close near to the downtrend. So between them there is a bigger parity present. So let me go for natural constant. So natural constant tells me that 24,312 above I have a uptrend, but I will not be buying here. Buying and selling part I will tell you. So similarly, I have 24,277 below, I have a downtrend. And as per the current price at 934, we have seen that we have gone till 24,299 on the opening basis. We have come down to 24,223 low in the till this point of time. So here, if I just look into these values, 223 to 299, this is the value means I have oscillated. So now today also is a very special day. Today's day is not a general day, general trading day. What is the speciality today? Can anyone will tell me? What is the speciality of today? Today RBI review is there.
Around 11 o'clock, you will get the RBI review. So RBI is going to have a review today, and around 11 o'clock, around 11 o'clock, we have a 11 to 11:30 RBI review is there. When there is a RBI review, when there is a Federal Reserve outcome, when there is budget, so something market consolidate for specific time, then after market expands. So sometime market will consolidate. मार्केट उस दिन कुछ देर तक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद में मूव देगा। जब वो हमारा आरबीआई का रिव्यूज आ जाएंगे, उस समय में ये हमें कोई भी ट्रेंड ब्रेकआउट देगा। तो फर्स्ट नेचुरल कांस्टेंट आप लोगों ने देखा, हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन द नेचुरल कांस्टेंट। हियर वन स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाई आई एम नॉट टचिंग टुडे, तो डेप्थ इज वाइड। 362 26,363 के ऊपर में अप ट्रेंड, 26,235 के नीचे में डाउन ट्रेंड, इसके बीच में एक बड़ा गैप है। एंड ये गैप का कारण ये है कि आज का दिन जो आरबीआई का रिव्यू है, एंड जो 2 दिन पहले एक बड़ा फॉल हुआ, उसी के कारण से वोलाटिलिटी बढ़ गया। सो बिकॉज ऑफ दैट वोलाटिलिटी हैज इंक्रीज्ड, वी आर नॉट, I am not considering these things, I am going for the natural constant. So natural constant is telling me 24,312 above uptrend will be set, and 24,285 below downtrend will be set. But my buying entry, where it will happen? Golden mean here 26,321 के ऊपर में निफ्टी को मैं खरीदूंगा। सिर्फ खरीदूंगा नहीं, 26,300 का पुट ऑप्शन भी उसके साथ में खरीदूंगा। हेजिंग के साथ में कैसे ट्रेड करना है? बाई फ्यूचर एट 26,320 और 321 एंड हेज विथ 26,300 पुट, प्रिफरेबली मंथली पुट, नॉट वीकली पुट। So you need to buy a future 24,321 and hedge it with 24,300 put, preferably monthly expiry, and August monthly expiry. You have to hedge it with this. So this is the reason why all the 78 lakhs people are losing. जो 78 लाख एफ एंड ट्रेडर लोगों ने लॉस किए सेबी के हिसाब से, वो 78 लाख से एक भी आदमी हेजिंग नहीं किया होगा। Not even one person would have hedged, that is I am confirmed. कोई उसमें हेज नहीं किया होगा। अगर हेज करते तो वो नंबर वो नहीं आता, एटलीस्ट 50% होता। एटलीस्ट सेबी वुड हैव टोल्ड आउट ऑफ 85 lakhs एफ एंड ट्रेडर, only 40 lakhs are losing, 45 lakhs are making money। ये नंबर अलग होता। एंड ये जितने भी इंट्राडे ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लेवरेजिंग, नो हेजिंग। हेजिंग कैसे करना है? Buy the future at 24,321, hedge it with 24,000, 24,300 put, buy. So this also buy, hedging हो गया, put उसके साथ में hedge कर दिया गया। So when to put stop loss, where to book the profit? अगर ये होने के बाद में, after initiating this trade, what happens? Your first hyper cycle is 24,383. तो ट्रेलिंग करो। हाउ टू ट्रेल? कैन एनीवन विल टेल मी? कोई मुझे बता सकता है ट्रेल कैसे होगा? पहले हमने 320 में खरीदा, 383 हो गया, तो हम क्या करें? व्हाट यू शुड डू? आई विल टेल व्हाट आई विल डू। मैं बोलूंगा कि मुझे क्या करना है, आपको, आप बोलिए आपको क्या करना है, जल्दी बोलिए। आपको सिर्फ रिलायंस में काम कर दूंगा पैसा आ जाएगा, इसमें काम कर दूंगा पैसा आ जाएगा, वो सब नहीं होगा। एक ही में करो, सही तरीके से करो, पैसा आएगा। वो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। अगर एक ही ट्रेड करो, सही तरीके से करो, आपको प्रॉफिट्स आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1000 तरीके से करो, कोई भी प्रोसेस फॉलो न करो, 5000 काउंटर में काम करो, भाग्य वही रहेगा, 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। So what will be the process? Now here 2 readings you are getting. ट्रेड को जितने सिंपल लोगे उतना सिंपल बनेगा। ट्रेड को हर वक्त सिंपल बनाओ, सिंपल से सोचो, सरल तरीके से सोचो, तब आपको आंसर्स मिलेंगे। तो
फर्स्ट मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा लेफ्ट में ले लेता हूं, तो व्हाट विल हैपन, so that we can see that. So I am using the English and Hindi, both the languages, so that those who do not know English, they can also take the benefit of that. तो देखो यहाँ पे 26,321 के ऊपर में अगर हम बाई करेंगे और 21 में बाई करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,277, ये हमारा स्टॉप लॉस 26,277, ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस अगर हम बाई करते हैं तो। इफ सेलिंग का साइड भी बताऊंगा, हेज हो गया, बाई हो गया, स्टॉप लॉस फिक्स हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? आप लोगों में से ज्यादातर लोग जब 24,383 आएगा आप प्रॉफिट बुक करके आ जाओगे। So here, if you are buying at 24,321, along with one 24,300 put option buy, then we must keep our stop loss at 24,277. Means when the 24,277 comes, we have to close the future at loss. We have to book few points in the 24,300 put option profit, and we have to close the trade and come out. अगर प्रॉफिट में गया 24,383 में गया तो व्हाट विल डू, मैं क्या करूंगा? सो व्हाट आई विल डू, आई विल बाय 24,400 put and close 24,300 put। जो मैंने पुट पहले खरीदा था हेजिंग के साथ में, उसको मैं क्लोज करूंगा, 26,400 का पुट लूंगा। क्यों वो कर रहा हूं? क्योंकि मुझे सेकेंड साइकिल में जाना है। सेकेंड साइकिल इज एट 24,405 हैविंग टिल 24,468। 26,402 में सेकेंड, 405 में सेकेंड साइकिल शुरू होगा एंड सेकेंड साइकिल यहाँ पे शुरू होगा 26,405, वो जाएगा 26,468 तक। अगर 468 हुआ फिर भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, आई विल वेट फॉर द थर्ड साइकिल। सो इफ इट इज गोइंग टू 24,467, I will buy 24,500 put and close 24,400 put। तो तीन साइकिल 552 हो गया, 552 हो गया तो मेरा तीन साइकिल कंप्लीट हो गया। 552 आई विल क्लोज माय पोजीशन। तो एक ही ट्रेड किया, कितने पॉइंट का गेन हुआ? मैंने एंट्री किया 320 में, एंटर कर एग्जिट हो रहा हूं 552 में, नहीं हुआ। सेकेंड साइकिल 367 होके अगर गिरता है, then again I will be, once it is coming to 24,383 level, I will close and come out। मेरा प्रॉफिट कुछ तो रहा होगा, सब नहीं चला जाएगा, बहुत एक 80% प्रॉफिट बचा हुआ होगा, I will come out। किसी को कुछ क्वेरीज है? एनीबडी हैज एनी क्वेरी इन दिस, कैन आस्क मी। क्या ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया? So if you are selling, again I repeat, if you are selling at 24,277, hedge it with an 24,300 call option buy, stop loss 24,320, अभी 277 में है। So once it is coming to 24,215, then you bring your call option to 24,200, close the 24,300 call. Once it is coming to 24,131, close the call option and bring it to 24,100 call. And final, once it is coming to 24,047, you book the profit. Offside, if you are buying at 24,321, hedge it with a 24,300 and put option buy. Stop loss 24,277. And once it is coming to 24,400, close the put and buy 24,400 put. And once it is going to 24,467, close that put and go for 24,500 put. By this process, wait till the third part to come, or the third place to come, or the third cycle to come, to book the profit.
सो दिस इज व्हाट फॉर द निफ्टी. सो निफ्टी को थोड़ा एलाबोरेट करके मैंने समझा दिया. अभी बैंक निफ्टी देखते हैं. बैंक निफ्टी टुडे इज द date for the bank nifty. Why? Our today is our RBI review date. So knowingly I kept the session so that in an extreme day you should experience how this system works. One standard deviations का रीडिंग को लिख दो. 50,340 to 50,404 above of trend. 50,074 below there is a downtrend. And what is the value now, or what is the futures value now? So let me go for the future. So let me put here future index Bank Nifty, and 28th August Bank Nifty 50,000 258 260 it is trading. So 50,000 258 or 260 it is trading here. So now what it says us, if we are going to buy at 405, because बैंक निफ्टी के लिए 0.382 में ही एंट्री करना पड़ेगा. Suppose if you are buying at to 50,405, what how we should hedge? How we should hedge? Quickly you should tell. And what will be stop loss? बाइंग वाला हेज में पहले कंसेंट्रेट करो. जो एडवांस ट्रेडर है दे कैन सेल, बट आज ए बिगिनर हाउ यू शुड हेज. अगर बैंक निफ्टी को आप खरीदते हो, देखो ये हेज हेज मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, वाई आई एम रिपीटिंग दिस हेज हेज हेज. ये नंबर के लिए, ये जो नंबर सेबी ने दे रखा है, आप किस में आना चाहते हैं. If you still trying to maintain in this 78 lakhs loser, you don't listen to me at all. If you want to still be in the side of 70 lakhs loser, you don't listen to me at all. If you want that your fate should change, you should be in that small segment of profit maker, then start hedging your trade. Without hedging your trade, without hedging your trade, you cannot make money in the market. That is of a surety, or it is a guarantee I am giving. Without hedging, money cannot be made. 26 50,405, if you are buying bank nifty, must hedge it with one 50,500 put option buy. This is simplest hedging. 50,500 put option buy, monthly options buy करना. If you are selling the bank nifty at 50,074 level, you must buy one. If you are selling, future sell means buy 150,000 call option of August. Call option buy. That is what hedging. अगर ये हेजिंग करोगे, इफ यू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, ये अभी नहीं मैं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग फ्रॉम द ईयर 2005, जब से फॉर्मेशन हुआ स्मार्ट फाइनेंस का, उसी दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं. ऑल माय वीडियोस यू कैन फाइंड आउट इन माय यूट्यूब चैनल. Everywhere I repeat one single sentence, my dear friends, hedge, hedge, hedge. कोई सुना नहीं. अभी देखो उसका फल कैसे मिलेगा. 80-90% लूजर, उसमें से इसी रूम में बैठे होंगे बहुत सारे लोग जो उनका सब कुछ चला गया. That part is there. Second factor is there. Now they are going to bring lot of restrictions to, because you can't change, so they will create an environment that you cannot trade. बड़ा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइज बना दिया जाएगा, ये किया जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स दे विल ब्रिंग. सो इंट्राडे एवरेजिंग कम कर दिया जाएगा, एक्सपायरी को घटा दिया जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू ब्रिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. ना बोले तो भी अच्छा है. दैट विल बी द, you can say, most difficult things for the traders. जो 5 लाख में गवा रहा है, वो 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट भी करोगे भी वो गवाएगा. If you make that contract size as 25 lakhs also, they will lose. So there are many plugging areas, many more things they are going to make it, and virtually it will, over a period of time, it will become a instrument where retail traders will not trade at all. Hedging
क्योंकि हम करना नहीं चाहते। तो that is what the regulatory actions should be taken, because that is what they can do the maximum for us, that you should not lose the money at least. So they will bring the contract size as big 25 lakhs. Now 5 lakhs it will become 25 lakhs. निफ्टी का लॉट साइज 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो कैसे काम करोगे? एंड हेजिंग नया ना करो उस समय में तो पूरा बर्बाद हो जाओगे एक दिन में। सो दे वांट, even though if you do not do the hedging on that after increasing lot size, then you will finish your capital in a single day. अभी 5 लाख में पांच पांच दिन में गवा रहे हो, उस समय में एक ही दिन में गवा दोगे। सो दैट इज व्हाट। तो अभी भी समय है, संभल जाओ। कैसे करना है? If you are buying at 50,400, hedge it with one 50,500 put option purchase. This is simplest hedging. जो लोग थोड़ा एडवांस है वो बहुत तरह से कॉल बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, डेल्टा जीरो कर सकते हैं, दैट इज देयर डोमेन। एंड इफ इट इज फॉलिंग बैक आफ्टर यू परचेज, कोई हरी भरी 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस में मत लिख लो, लेट इट कम टू 50,074, बुक लॉस, book profit in 50,500 call options. 70% or near to 70% of your losses will be get recovered. If you hedge, near to 70 to 75% of your losses will be get recovered. So then after, if you want, you can enter a short trade. So ये levels को अभी देख लो, इंट्राडे वाइब्रेशन को भी देख लो। अभी तक बना कितना? 50,335, 50,175 लो था, 50,175 was the low. So here 186 was the vibration number, 112 is vibration number, इसके नीचे में 50,000 एक वाइब्रेशन नंबर, ये फ्यूचर प्राइस दिया गया है इंट्राडे के लिए। Now 287 above, if it is 270 level it is trading now, 287 above कोई भी वाइब्रेशन नंबर नहीं आता है, ये सीधा जाके 50,900 तक आता है, वहां पे जाके वाइब्रेशन नंबर बैठा हुआ है। सो पोस्ट द RBI review, if there is a uptrend breakout given, it will be a fantabulous movement till 51,000, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस को वो पार कर सकता है, बिकॉज दीज आर नॉट वाइब्रेशन नंबर। वाइब्रेशन नंबर वही होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है। आज का दिन बहुत बढ़िया भी रहेगा अगर अप ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो। वन स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंसिपल सेज अबाउट सेम थिंग, सो स्लाइटली वाइडर रेंज एंड slightly wider range, but natural constant also gives you the similar kind of values, or you can say slightly lighter range, natural constant थोड़ा lighter range दे देता है, and one standard deviation थोड़ा सा wider range देता है। So this is about this software. Now we will go for the option scanner. इसमें से क्या करेंगे? स्प्रेड ट्रेड करेंगे, स्प्रेड ट्रेड। सब अभी प्रॉब्लम क्या है रेगुलेटरी बॉडीज को? व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर ऑल आवर रेगुलेटरी बॉडीज? दे आर टेलिंग ऑल आवर फेलोज ऑप्शन में गवा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ आवर ट्रेडर्स आर लूजिंग इन द ऑप्शंस। अभी 217 आया गया था, 215 है। अभी अभी आपने निफ्टी का देखा, वन स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसका भी आप। तो नाउ हम स्प्रेड ट्रेड करेंगे। सो नाउ सपोज अभी डाउन ट्रेंड में है, हाउ वी शुड डू द स्प्रेड ट्रेड? यहाँ पे हम लोगों ने एक स्कैनर दे रखा है, ऑप्शन स्कैनर में जाओ, मंथली ऑप्शन, वीकली ऑप्शंस। मैं शुरू से बोल रहा था कि दिस इज वन ऑफ द टॉक्सिक इंस्ट्रूमेंट। जो पुराना पार्टिसिपेंट है आप सब याद करो, जब वीकली ऑप्शंस आया तो मैं क्या बोला? ये एक टॉक्सिक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें IV is going above 100, so this is saying that delta is above 1, so this is a wrong instrument imposed upon us. अभी रेगुलेटरी वही बोल रहा है। अभी जो मैं 5 साल पहले बोल रहा था, 2020 में, 19 में, 21 में, जो मैं बोल रहा था, हर प्रोग्राम में ये दोहरा रहा था, डोंट टच दैट, दैट इज ए टॉक्सिक इंस्ट्रूमेंट। आपका रेगुलेटरी से भी वही लैंग्वेज वही बोल रहा है, दिस इज से जीरो और हीरो, वीकली डे एक्सपायरी डे में ट्रेड करना वो एक गधे वाला ट्रेडिंग है, वो रेगुलेटरी बोल रहा है। मैं बोल रहा था आपको 5 साल पहले, रिकॉल करो कितने बार मैं बोला है।
ये इंस्ट्रूमेंट हमारा कोई काम का नहीं है. दिस इज नॉट सॉल्विंग आवर हेजिंग नीड एट ऑल, because we are trading in monthly future. How we can hedge it with one weekly option which is having a higher theta decay factor? उस समय में जो मैंने बोला था वही चीज हुआ, एंड एफआईज ने आप लोगों को लूट के लिए वो भी मैंने दिखाया था, और फिर से भी दिखा देता हूं, सबका विजडम थोड़ा ओपन हो जाएगा. एफआईज डाटा को थोड़ा देखो. सो एवरीबॉडी शुड सी दैट व्हाट हैपेंड, व्हाई रेगुलेटरी पीपल, सेबी हैज स्टेप्ड इन. ये इसको देखो, ये पब्लिक फोरम में है, ये मेरा मैन्युफैक्चर्ड डाटा नहीं है. सो सी हियर, हम लोगों का ये डाटा है 2016 से 2016 नवंबर ऑनवर्ड्स वी हैव द डाटा हियर इन मनी कंट्रोल फोरम. कभी भी हमारा 2023 सितंबर तक 2023 सितंबर तक हम लोगों का जो सितंबर तक कभी भी वेरी रेयरली थ्राइस 2016 से लेके अगस्त 2023 तक 3 या 4 बार ये हुआ 1 लाख के ऊपर में नेट परचेज या सेल हुआ. फ्रॉम 2016 to 2023 August, FIE's activities in the F&O, especially index option में, in index option, the turnover goes above 1 lakh crore hardly thrice or 4 times in almost 7 years. 7 साल में hardly 3 times the turnover has gone to 1 lakh crore above. सितंबर में क्या हुआ कि ये टर्नओवर सडनली 2-2.5 लाख में आ गया. सितंबर इन 2023 सितंबर व्हाट हैपेंड, सडनली दिस टर्नओवर गॉन टू 2,38,000 crore, and this has goes on increasing, and it has touched January 2024 6,29,000 crore. ये सारे अमाउंट अपना रिटेल ट्रेडर गवाया है. This you keep it in writing. That is why the SEBI steps in and gives you all this thing. And ये 1,00,000-2 लाख करोड़ का चला. जून इलेक्शन हुआ, some regulatory actions initiated. When the June election started, 2024 June onwards, regulatory people become active and ये टर्नओवर गिर गया. देखो 2 लाख से 52,000 हो गया, स्टिल 85,000 था. ये तो सिर्फ सेल वाला था. दीज आर ऑल सेल फिगर्स आई एम टेलिंग. सितंबर 2023 टू अप्रैल मार्च 2024 किसी भी महीने में नो बाइंग, ओनली सेलिंग, एंड ओनली इन अप्रैल देयर इज अ बाइंग सेम अमाउंट, एंड जून regulatory actions has impacted, they have reduced their turnover 75% कम कर दिया. जुलाई में उन्होंने खरीदे क्योंकि बिकॉज दे फियर दैट देयर शुड बी मोर एक्शंस. देन सी अगस्त, दैट नंबर आल्सो 73, सम बाइंग इज देयर, मींस दैट एक्शंस दे आर रिड्यूसिंग. ये सारे जो हुआ आप लोगों ने किसी ने उसको देखा ही नहीं. इतना पैसा हमारा यहां से गया है. दिस इज द मनी वी लॉस्ट. क्यों? हम लोग सिर्फ एक्सपायरी के दिन में 2 रुपया का ऑप्शंस को खरीद लेते हैं. 20 रुपया हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे. दैट इज व्हाट आवर आइडिया इज. 90% ट्रेडर यही करते हैं. तो व्हाट हैपेंस, देयर इज नो अदर वे, वी हैव अ वे. नाउ मार्केट फॉल हो रहा है. देखो मार्केट अभी 24,200 में है. एक स्प्रेड ट्रेड आज इनिशिएट करके देखो. पुट ऑप्शन बिटवीन सेल एंट्री एंड टारगेट. इसी को थोड़ा ये करता हूं. मैं सिंपल तरीके से बोल रहा हूं, अति सरल तरीके से बोल रहा हूं. Now I have this, we have analyzed, it is telling these are the strikes appropriate for the trade. आज के लिए एक स्प्रेड ट्रेड बना के देखो, एक बना के देखो, आप इसको समझ जाओगे. कॉल एंड पुट दोनों में रहेगा. मार्केट न्यूट्रल में काम करेंगे. विल डू इन मार्केट न्यूट्रल अप्रोच एंड कॉल एंड पुट बोथ. व्हाट यू डू हियर, keep it in writing. I will also again write in the Excel. 26,150 का पुट ऑप्शंस को खरीदो, 23,900 का पुट ऑप्शंस को बेचो.
This is what you need to do, and you need to close this trade if the Nifty comes to 23,942 or 26,046, whatever we have calculated. If that comes, we should close. तो इसी को लिख देता हूं स्प्रेड ट्रेड के हिसाब से, बाई 26,150 पुट at 311, सेल 23,900 पुट 224, each one lot. Book profit at 24,047. Book loss if Nifty come to 24,321. ये इसको करो पहले। अगर 24,321 आता है, अभी तो नीचे में है, if it is coming to 24,321, how to do it? Go to call between buy entry target, इसके बीच में एनालाइज करो। ये आया 24,250 एंड 24,450। चाहो तो अभी दोनों ही ले सकते हो। सो बाई 24,250 कॉल। सो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, स्ट्राइक बदल दूंगा। तो 20, यहां पे एक स्पेस भी दे रहा हूं। when Nifty future come to 24,321 by 24,250 call, 250 कॉल ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है 342 में, उस टाइम में शायद 375 भी होगा, 375 लगा रहा हूँ, मे बी दैट टाइम इट विल बी। नाउ ऑल्सो यू कैन टेक बोथ, कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो, एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है तो दोनों ही ले लो, बाद में कुछ आइडिया आएगा। सो 250 कॉल बाय, इफ यू आर बाइंग नाउ यू कैन पुट इट दिस प्राइस 42 एंड सेल 24,450 कॉल, 450 का कॉल। और ये इसको बोलते हैं इंट्राडे स्प्रेड ट्रेड। 242 24 242 ईच वन लॉट, बुक प्रॉफिट एट जो भी 24,400 के लेवल पे या 556 के लेवल पे बुक करो। सो जो भी आया था 24,556 बुक प्रॉफिट। बुक लॉस इफ इट निफ्टी कम्स टू 24,047। अगर हम अभी इसी को एंटर करते हैं, if we are entering both the trades now at 10 o'clock, then where to put the profit and when to put the losses? अगर अभी हम इसको एंट्री करते हैं, बाद में 24,321 हो गया, इसमें लॉस बुक करके आ जाओ, इसको होल्ड करो। अभी अगर हम एंट्री करते हैं नाउ, इफ यू आर एंटरिंग नाउ द स्प्रेड ट्रेड, इफ इट इज गोइंग टू 24,047, इसमें लॉस बुक करके आ जाओ, इसमें प्रॉफिट बुक करो। नाउ इफ यू आर एंटरिंग करंट प्राइस एट प्रेजेंट व्हेन निफ्टी इज एट 26,186, अभी अगर हम एंट्री करते हैं ऐसे ही करेंगे। समझ में आया? स्प्रेड ट्रेड एक करके देखो, सिंपल सा आप खरीद लेते हो, 10 रुपया का ऑप्शन, 15 हो गया, नाचने लगते हो, हाँ आज करोड़पति बन गया, कल पूरा गवा दिया, 15 दिन गवाया, एक दिन नहीं गवाया। स्प्रेड ट्रेड में आईवीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, दैट स्प्रेड ट्रेड में आईवीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है सौरभ जी। And the spread trade, whenever you are making 40% IV, it is maintaining. So calls are having 12 and puts are having 17. So there is 40% difference it is having. So no need to worry. Spread trade करो, क्योंकि यही ट्रेड आगे चल के एग्जिस्ट करेगा। Because when the weekly trade went, everything will be banned by this particular SEBI regulations. स्प्रेड ट्रेड ही एग्जिस्ट करेगा। सो दैट टाइम ओनली स्प्रेड ट्रेड विल एग्जिस्ट। आरबीआई का रिव्यू है आज, तो एक स्प्रेड ट्रेड बना के तो देखो, पेपर ट्रेड करके देखो, यही प्राइस तो अभी चल रहा है।
सो जस्ट मेक ए एंट्री। जो मैंने बताया यहाँ पे, इसी चीज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 18 कर देता हूँ साइज, तो इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, पेपर में लिख दो एंड 24 456 में 2 बार 4 टाइप हो गया। तो यहाँ पे 556। तो इसी को थोड़ा पेपर ट्रेड करके आज देखो, मेक ए पेपर ट्रेड एंड सी हाउ इट वर्क्स। पेपर ट्रेड करने में तो कोई हर्ज नहीं है, पैसा तो लग नहीं रहा है। सो दिस इज हाउ स्प्रेड ट्रेड विल बी गिवन। सो ट्रेंडिंग जब हो जाता है तो एक साइड करने से पता चलेगा स्प्रेड ट्रेड। आई एम रिकमेंडिंग फॉर बोथ द साइड्स बिकॉज टुडे इज a special day, today is RBI's review day, so for that and expiry, so that weekly expiry, so for that we are entering this. Suppose if it is a normal day and there is a uptrend breakout has given, by this process you can do it. So how to choose these strikes, ये बता रहा है यही 5 स्ट्राइक्स में आज थीटा डिके कम होगा। दिस सेज, दिस सिस्टम, दिस स्कैनर सेज टुडे दिस 5 स्ट्राइक्स विल हैव लेसर थीटा डिके, तो हम वही स्ट्राइक में काम कर रहे हैं। सो दिस स्ट्राइक लोएस्ट वी आर बाइंग, हाईएस्ट वी आर सेलिंग। सो सेम थिंग फॉर द पुट। सो द put which is having the higher probability to become in the money, we are buying that, and put which is having lower probability to become in the money, we are selling that. तो जो कॉल ऑप्शंस इन द मनी बनने का चांसेस ज्यादा है, जिसका चांसेस ज्यादा है उसी को खरीद रहे हैं, जिसका कम है उसको बेच रहे हैं। पुट में भी वही। एंड हियर ऑल्सो यू कैन से दैट द ऑलमोस्ट आईवी न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, थीटा भी न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, बट डेल्टा न्यूट्रल नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बट ये सरल स्प्रेड काम तो कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड टेकिंग ऑल 200 रुपीज लॉस, इसमें अगर आप सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदते हो, पुट ऑप्शन खरीदते हो, तो 310 रुपया का रिस्क लेते हो। सो बाय सेलिंग दिस यू हैव रिड्यूस्ड योर लॉस रिस्क बाय 75 रुपीज टू 75 रुपीज, 75 रुपया कम हो गया। 300 से 75 रिस्क, व्हाट फैंटास्टिक। एंड इसमें से फियर भी नहीं रहेगा, डे एंड में कुछ तो कुछ आ जाएगा। एनी 100-150 पॉइंट मूव फ्रॉम योर बेस यू विल गेट इट। मैं तो अभी 2 साइड बता दिया, जब अप ट्रेंड जा रहा है तो पुट क्यों लेना है, सिर्फ कॉल लो, कल में आ जाएगा। इसमें से ज्यादा नहीं बनेगा, 300-500 रुपया ही बनेगा। 300-500 रुपीज ओनली यू कैन मेक। किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। जो हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो भी बहुत एडवांस हेजिंग भी जानते हैं, बट आई एम टेलिंग यू टू डू द सिंपलेस्ट ट्रेडिंग। सिंपलेस्ट ट्रेडिंग, सिंपलेस्ट, बहुत सरल तरीके से। फ्यूचर खरीदो, पुट खरीदो, फ्यूचर बेचो, कॉल खरीदो, दैट इज द सिंपलेस्ट ट्रेडिंग। उसी में काम करो पहले 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। थोड़ा सा ग्रिप आ जाए, थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाओ, उसके बाद में थोड़ा एडवांस करो, एडवांस करो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा जम जाओ, कुछ पैसा बना लो, तब बढ़ाओ अपना जो भी एडवांस ट्रेडिंग करो, पैसा बहुत बनाओ। पैसा बहुत बनेगा, ये भी मैं आपको अश्योर करता हूं। अगर पढ़ के काम करोगे, स्टॉक मार्केट जैसा बिजनेस दुनिया में भी नहीं है। बेस्ट बिजनेस पढ़ के करोगे तो, आंख बंद करके करोगे तो ये पूरा लूट लेगा, आपका वॉलेट खाली कर देगा, घरवार ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। तो ये भी समझ जाओ, इट इज ए 2-edged sword। अच्छी तरह से काम करोगे, पढ़ के करोगे, हेजिंग के साथ में काम करोगे, ये आपको आपके आशा के ऊपर में भी रिवार्ड कर देगा। इट विल रिवार्ड यू मोर देन यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। But without doing that, if you do any foolish trade, then it will punish you very badly also। ये आपको ज्यादा दंड भी देगा, इसका विधान भी वही है। तो ये दोनों सीख लो। आज मैंने थोड़ा एलाबोरेटली आप लोगों को समझाया, लेवल्स दिखाया। यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स। टुमारो कल फिर से बनेंगे, फिर से यही चीज ये करेंगे। जो मैंने स्प्रेड ट्रेड आपको बताया, उसका डे एंड में क्या परफॉर्मेंस रहा, निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा, बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा, कल सुबह जब फिर से लाइव प्रोग्राम होगा मैं बताऊंगा।
सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड फिर कल मिलेंगे और एक बार। इन फ्रंट ऑफ आवर आईज ओनली इट हैज कम टू 215, 215 मैंने गलत एक्सपायरी डाल दिया। सो सॉफ्टवेयर थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, तो इसको समझ लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी का जो 29 था दैट आई हैव चूजन 28, बिकॉज ये एक्सपायरी का एक अभी गोलमाल वो करके बैठे हुए हैं। सो निफ्टी नेचुरल कांस्टेंट का कैलकुलेशंस देखो, अभी यही लेवल से है। क्या हुआ था, 26,215 आया था। यू पीपल हैव सीन इट, 26,215 रुपया 5 पैसा आया था। अभी क्या आया है, 152, 26,152 ऑल्सो केम 26,152, 152। तो इसी के नीच में आ गया, 72 से 31 के बीच में ऑलमोस्ट 72, 52 आया। तो डे एंड तक देखिएगा, जो भी लोज बनेंगे, जो भी हाइज बनेंगे, ये सारे इन कैलकुलेशन के साथ में मैच खाएंगे। मोस्टली इट विल मैच देयर। सो सो 24 जो भी, वो 26,152 आया था। तो एंड तक देखिए कहां तक ये जाता है। सो दीज आर तो एट द एंड ओनली यू विल एक्सपीरियंस दैट हाँ ये कैलकुलेशन काम किया या नहीं। So this I will remain today's session. Again we will meet tomorrow. Again we will validate. Again we will do the spread trade. So 3 दिन करके देखते हैं। 3 दिन थोड़ा पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए ये कॉन्सेप्ट काम करता है या नहीं। उसके बाद में पसंद आता है तो इसको अपनाइए, ये सॉफ्टवेयर लीजिए या इसको काम पे लगाइए। अगर काम नहीं करता है तो इसको आपके पास में पूरा राइट से आप इसको इग्नोर कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर